बहुत समय लगुच। Again, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। समस्त आज क्लास को स्वागत। आशा करछि समस्ते भलरे थिबो, खुशी थिबो, आउ पढ़ा पढ़ी को एंजॉय करथिबो। तो आरंभ करिबा आज क्लास विदाउट एनी डिले। बहुत समय हेलानी, बहुत देरी भी हेलानी। ऑलरेडी हमें देखिथिले जे या पूर्वरु कोन कोन थिला। ऑलरेडी हमें देखिथिले जे या पूर्वरु फास्ट ऑर्डर रिएक्शन थिला। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन और तार काइनेटिक्स हमें स्टडी करथिले। बर्तन तार हमें कौन देखिबा प्रॉब्लम, तार रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम रही फास्ट ऑर्डर रिलेटेड। से सब प्रॉब्लम्स को हमें आज सॉल्व करिबा। तो फास्ट हमारा गोटे प्रॉब्लम थिला रिलेटेड टू फास्ट ऑर्डर, ऑलरेडी गोटे दिया हिथिला। आ गोटे प्रॉब्लम थिला द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज दिस वन, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। कि कैलकुलेट करियो कि क्वेश्चन दा हाफ लाइफ पीरियड केमदी कैलकुलेट करा हबो। ऑलरेडी तमाने जानि थिबो जे हाफ लाइफ आउ या भितर रिलेशन कौन, हाफ लाइफ आउ रेट कांस्टेंट भितर रिलेशन कौन। समस्त जानि थिबो। ए क्वेश्चन को समस्त सॉल्व करिया को ट्राई करो। सरला में आउरी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवा। नो आंसर, किछि आंसर आसिलानी, केही भी किछि आंसर कलानी। हो ठीक अछि, मु कर दोछि। जो माने कर नथिबो ठीक अछि, आउ बे समय नष्ट करिवानी, सॉल्व करनबा। कौन रही ना एडे रेट ऑफ ए रिएक्शन बा रेट कांस्टेंट दे दिछि। आमे यार यूनिट रो जानि परले जे एटा होछि गोटे फास्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक अछि, सेकंड इनवर्स। ओके, लास्ट इनवर्स देखो। अब हमरा हाफ लाइफ पीरियड रो फार्मूला होछि कोन, दैट इज t half is equal to 0.693 divided by k1, 0.693 by k1, so 0.693 divided by 0.00693। ठीक अच्छे, ताले एटा केते हो 693 multiplied by 10 to the power minus 3 divided by 693 multiplied by 10 to the power minus 5। 693 cancel, so answer as 10 to the power minus 3 plus 5, that is 100। so answer is 100 second। half life period is 100 second। बुझियला, समस्ते बुझी पारला जे हाफ लाइफ पीरियड होची हमर केते 100 सेकेंड। ए क्वेश्चन रो हाफ लाइफ पीरियड हमर आसीबो 100 सेकेंड। आशा करछि समस्ते बुझी पारथिबो क्वेश्चन टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 10 minutes is completed। a fast order reaction is completed by 20%। क्वेश्चन टा टिके गड़बड़ थिला वाली लागिला, ग्रामेटिकल मिस्टेक। is completed by 20% in 10 minutes। एक्चुअली टिके क्वेश्चन रे ग्रामर टिके एपट सेपट थिला वाली लागिला। ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज completed by 20% in 10 minutes। काहे कि एटे कोन गड़बड़ थिला, काहे ना इज होची तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब, अब
मेन वर्ब होची कंप्लीटेड आ एटा होची पैसिव फॉर्म रे रहिची ठीक अछि पैसिव तो नो सॉरी इनडायरेक्ट हां पैसिव फॉर्म रे रहिची एक्टिव फॉर्म नो पैसिव फॉर्म रे रहिची सो इज पर से नहीं कंप्लीटेड रहइबो एक्सिलरी पर वर्ब रहइबो सो बाय द वे लीव इट हम एटे ग्रामर क्लास तो करू नै हम एटे पाठ पढचे केमिस्ट्री हां सॉल्व करबा ए क्वेश्चंस को क्वेश्चन को सॉल्व कले हमारा कौन रही फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज completed by 20% in 10 minutes. Calculate the rate constant, half life period, time taken for 75% completion. So प्रथमे हमें आंसर सॉल्व करबा प्रथमे हमरा रेट कांस्टेंट पाई सो हमरा एटी कोन रहिछि ना 20% कंप्लीशन हला ता माने a - x is equal to a multiplied by 20% 20% कंप्लीट हला ता माने बळिला केते सॉरी 20% कंप्लीट हला माने x is equal to a into 20% ताले a minus x बळिला केते ताले 80% so a into 80 by 100 that is 0.88 ठीक अछि बुझियला so a minus x is equal to 0.88 कहीं ना 20% कंप्लीट हला सो बळिला केते 80% ताले टाइम केते दे दीची टाइम हियर गिवन एज 10 मिनिट आमे पिला माने 10 मिनिट रे ही सॉल्व करबा सेकंड को जिबा दरकार नाही हमको मिनिट रे ही सॉल्व करी छाड़िबा कारण सेकंड रे किछ कहैनी ना सो हमें फार्मूला पकेबा व्हाट इज द फार्मूला दैट k1 is equal to 2.303 by t log a by a minus x what is the value of all the things so k1 हमको जाना नहीं 2.303 by t बाहर कर देले t जगह हम पकेबा 10 मिनिट्स राइट t जगह हम पड़िबो 10 मिनिट्स t is equal to 10 minute so let put here 10 multiplied over log into a by a minus x a minus x होची हमर केते ना 8 by 10 into a बा 0.8 ठीक अछि फर्दर हमें सॉल्व करले केते आसीबो ना a कैंसिल हे जीवो so it will becomes as 2.303 by 10 that is 0.2303 log logarithm of 10 by 8 माने log 10 by log 8 तो तुम जदि चाहिबो याकू सॉल्व करले केमदी करबो ना 2 रे डिवाइड करले log 5 by log 4 ठीक अछि 2 रे कल हबो बा तुम ताकू एमिदी भी छाड़ देला हबो केमदी log 10 by log 8 भी छाड़ देला हबो जेमदी कले आंसर ठीक अछि तो हमें वैल्यू सब पुट करबा कोन मु log 10 by 8 करी छाड़ देली तमे log 5 by 4 कले भी सेम आसीबो मु बते देब केमदी करबो so log 10 आमु किछि वैल्यू देई नथिबो आमे सब निजे डिराइव करबा माइनस log 8 एटा ଗୋଟେ logarithm ର प्रॉपर्टी यूज होला कोन ना log a by b is equal to log a minus log b जब तुम्हारा 5 थांता ताले कोन हितांता ना 5 minus log 4 हितांता log 5 minus log 4 0.2303 multiplied by log 10 रो वैल्यू होची 1 minus log 8 रो वैल्यू होची log 2 रो क्यूब किंतु एटे log 4 जगह पड़ंता केते log 4 जगह पड़िथंदा log 2 रो स्क्वायर बा 2 log 2 आ एटे log 5 बदल रे 0.7 पड़िथंदा 0.2303 multiplied by 1 minus 3 log 2 पिला माने तुमको ए तीनटा वैल्यू सबले मन रखियो पड़ो कोटा कोटा ना log 2 is equal to always 0.3010 एग्जाम रे देई पारे न देई पारे भी log 3 is equal to 0.477 and log 5 is equal to always 0.7 by 0.699 even 7 भी नहीं जाबो हमें कैलकुलेशन इजी होबा पे तो सॉल्व करबा 0.2303 multiplied by 1 minus 3 log 2 so केते आसीबो that is 0.2303 multiplied by 1 minus 3 log 2 3 into log 2 रो वैल्यू अछि 0.3010 बढ़िया कथा लक्ष्मीधर बहुत बढ़िया तमे सामने सांग मानक भी शेयर कर दियो तो एटा केते छिबो 0.9030 so solve कले 0.2303 multiplied by एटा केते छिबो
0.1070 0.1070 so हम एठी मल्टीप्लाई करबा व्हाट इज 2303 multiplied by 1070 2303 multiplied by 1070 एक दुई तीन चार सॉरी 8टा संख्या 1 2 3 4 5 6 so as जीव हमर केते the value will come as 0.0246 0.0246 okay 0.0246 एतिके आसीबा हमर आंसर कोडार याको सॉल्व करिया द्वारा सो हमर k1 आसी गला 0.0246 किंतु एटे बुक रे आंसर आछि 0.0223 तो हमको एठी किछि भी माने डरिबार नै जे हमर भूल आसी गला आ एठे अलगा आसीला कारण हेई था एमदी ठीक अछि एमती हेई थाए कौन ही थाए ना टिके एपट सेपट आंसर आस्थाए तो एथिरे किछि असुविधा नै 0.02 जदि न आछी ताले भूल 0.02 आसीबा को बाध्य सो k1 आसी गला माने रेट कांस्टेंट k1 आसी गला 0.02 अच्छा एठी यूनिट दबा को भूलिबोनी बहुत पिला एठी करिकि छाडी दियंती बट एठी मिनिट इनवर्स लेखिबा को जमा भूलिबोनी कारण एठी गोटे मिस्टेक जोटा कि हाफ मार्क काटी दे 0.0207 ठीक अछि लक्ष्मीधर 0.02 माने ठीक अछि 0.02 आंसर कहिछ माने इट इज ठीक राइट ठीक त नो राइट हाफ लाइफ पीरियड रो फार्मूला कोन राजा बेहरा ऑर्गेनिक पई ऑलरेडी हमर आप रे क्लास चली छि बाबा आप रे जेतु क्लास चल छि ऑर्गेनिक हमें एठी आरंभ करिया कथा बर्तन पई मु तो भाबी नहीं देखिबा हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा एठी धीरे धीरे 0.0246 तो सॉल्व कले केते हो 0.693 0.693 डिवाइडेड बाय 0246 तो एटा को हमें सॉल्व कले आसीबो केबे केते 6930 डिवाइडेड बाय 246 प्राय कैलकुलेशन हमको निजे करिया को पड़िबो एग्जाम रे कैलकुलेशन भले हमको निजे ही करिया को पड़िबो बट बर्तन पई सिंपलिसिटी पे हमें निजे कर दे परिबा कोन कोड होले देखि दे परिबा तो 28.17 मिनिट किंतु हमको एग्जाम रे कैलकुलेशन करिया पड़िबो जदि कैलकुलेशन न करि परछे ताले सेठी मल्टीप्लाई करिकि टर्म टा को छाडी देबा काहे कि हमर टाइम पळेबो जदि बेसिक कैलकुलेशन रे बहुत समय जदि दे देबा 33.478 हाफ लाइफ पीरियड आछि हाफ लाइफ पीरियड रहिछि 0.69 हम तो ठीक करिछि 28.17 मिनिट आछि 33 केंदि आसला हाँ तमे जदि 0.02 नउछ ना सो एटा 200 नउछ 200 नेले 200 तमरो आंसर केते आसला 207 सो 33.478 एठी टिके गड़बड़ हो जाउछि बुझियला ना ए क्वेश्चन एठी टिके गड़बड़ हो जाउछि हमको कैलकुलेशन जदि हमें ठीक ठाक न करछे देखो एठी 33 आछि लक्ष्मीधरंगर मोर 28 आछि एवला क्वेश्चन रे एठी आंसर टिके गड़बड़ हो जाउछि काहे कि ना लक्ष्मीधर नेले 0.0207 मु नेली 0.0246 कैलकुलेशन एरर आसीबो एटा स्वाभाविक कथा सेतने हाफ लाइफ पीरियड सब ए क्वेश्चन रे मे बी गिवन रहिबोनी जेहेतु एठी एरर रहउछि तो एटा जो माने क्वेश्चन करंती से माने निहाती भाबे चेक करंती जे सेठी जेमती एरर न आसीबो बा मिनिमाइजेशन ऑफ एरर जेमती रहइबो तो एटा डिफरेंट पर्सन डिफरेंट आंसर आसले बा एठे गोटे रेंज पई आंसर थिबो कोन ना 25 रु 35 25 रु 35 भितरे जदि आंसर आसे ताले ठीक अछि बोली करिकि आंसर दे जिवो तापर हमें जिबा नेक्स्ट टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन मनोरमा प्रणाम बहुत दिन हला मनोरमा आसी नथिलो बहुत बढ़िया कथा मनोरमा सो टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन बट टी 75% केते
75% completion माने बळका रहला केते 25%। ताले a minus x is equal to कोन हबो a multiplied over 25%। बा हमें कहि परिबा a by 4। so a minus x is equal to a by 4। ओ कॉलेज रे एग्जाम थाउची से नहीं क्लास कर परनो। ठीक अछि सब को मैनेज करिया पड़ियो कारण हमर कोर्स भी सरी सरी पळिबो। कोर्स देखुछ ना केते माने टिके स्पीड बढ़ी छि कोर्स रो हमको कोर्स सारिया को भी पड़िबो अक्टोबर मास भितरे पूरा फुल कोर्स एप्लीकेशन जो माने भी क्लास करछ समस्त कोर्स पूरा सारिले ही हमें रिवीजन कर परिबा क्रैश कोर्स को भला भाବରେ सक्सेसफुली लॉन्च कर परिबा आ ताको यूजफुल कर परिबा फॉर 12th एग्जाम। सो a minus x is equal to a by 4 हे गला ताले अप्लाई करो दैट k1 is equal to 2.303 by t 75% into log a by a minus x। k1 हमको ऑलरेडी जाना रही k1 is equal to वैल्यू केते रही ना मु एटा मल्टीप्लाई कर दोची 0.2303 मल्टीप्लाइड बाय 0.1070 2303 multiplied by 0.1070। so এটা টিকে ইজি হবো কটাকটি হবো বলি 2.303 divided by t 75% into log a value केते रही log a रो value रही a minus x किंतु a by 4 a कैंसल तारले एटा ऊपर पळे log 4 हे जिवो 0.2303 नहले एटा एमथि था हां ताले एटा कोन हे जिवो ना t 75% multiplied by 0.2303 into 0.1070 is equal to 2.303 log 4 बस ताले t 75% is equal to केते आसीबो ना 2.303 log 4 बदल रे हम डायरेक्ट लिख परिबा 2 log 2 म ऑलरेडी बतै देछि केमती हला divided by 0.2303 multiplied by 0.107। तमे एटे डायरेक्ट वैल्यू पकेले भी किछ असुविधा नै ओटे कटाकटी कले ऊपर तळे आस जिवो 0.1 2 log 2 माने होची 0.6020 divided by 0.0107 बा 602 by 107 5.92 मिनिट लक्ष्मीधर एतिके आसिले देखिबा हमर कैलकुलेशन कले केते आछि 5.62 5.62 तो 5 point something 5.596 किछि फरक पड़ेनी कैलकुलेशन मु कहिथिली कैलकुलेशन एरर आसीबो जेमतेले 5.62 मिनिट 5.59 थिले भी हबो ठीक अछि तब कैलकुलेशन एरर रहिबो पिला माने एटा ओटे स्वाभाविक कथा एबोला क्वेश्चन रे कैलकुलेशन एरर एनी हाउ रहिबो तेनु एटा ठीक अछि किछ असुविधा नै 5.62 किंतु एटा भूल थिला भले लागुछ काई कहला जदि हमर एटा ओटे भूल कोड ओटे हिच बोले लेट मी चेक एटा 6020 हबो राइट 6020 हबो divided by 107 so एटा 56.2 sorry it will be 56.2 calculation error थिला 56.2 मिनिट राइट so 56.2 मिनिट एक एठी बुक रे देछि आंसर 62.15 मिनिट आउ लक्ष्मीधर आसी 55.92 तब ए क्वेश्चन रे बेसिकली जदि हम देखिबा 55 रु 65 भितर जदि आंसर होछि ताले ठीक अछि हमरो
ठीक अच्छे 55 रु 65 भितर जदि रहुछि तो हमको बेसिकली देखियो पड़ियो जे क्वेश्चन को वेराइटी रहिछि आउ किछि क्वेश्चंस करबा एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड रे आसेबे कोन ना क्वेश्चन रहिछि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन the half life period of a first order reaction is 100 second is 100 second. Calculate the time required. Calculate the time required for 80% completion. एभला क्वेश्चन बोर्ड रे आसीबो भी ठीक अछि डेफिनेटली बहुत क्वेश्चन एभला आसीबो आ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एठी हमें जते वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा हमर सते शार्पनेस बढ़िबो हाफ लाइफ पीरियड दे दीची टी हाफ दे दीची केते 100 सेकंड फर्दर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% टी 75% केते पचरा है सो सॉल्व कले केंदे हमें करबा ना वी नो दैट k1 is equal to 2.303 by t 75% log logarithm of concentration of a divided by concentration of a minus x तापरे k1 रो वैल्यू माने हमें ऑलरेडी जानते दैट इज 0.693 by t half एटा गोटे फॉर्मूला भी यूज होबो ठीक अछि दिस इज इक्वल टू 2.303 divided by t 75% logarithm of a by a minus x logarithm of a by a minus x a होची केते a रो वैल्यू हमको जणा होची हां हमको बाहर करियो पड़ियो पूरा x होची तुम्हारा 75% ऑफ a ताले a minus x केते हबो ना 25% ऑफ a that is a into 25 by 100 that is a by 4 sorry 80% को आइछ परा ओ थैंक यू सनु सॉरी 80% अब सॉरी मो क्वेश्चन को अलगा वे रे नहीं हली 80% अब सॉरी यस सनु थैंक यू सनु एटी टी 80% राइट यू कैन आल्सो ऑलरेडी 75% हमें बर्तन सॉल्व कले देखिबा कते जन पिला करूछंदी आंसर करी कहउछंदी सो a into 20 by 100 दीप्तिश्री गुड मॉर्निंग ताले एटा केते हिसबो a by 5 so it is a divided by 5 ताले log a divided by a by 5 बा log 5 हे जिवो दिस विल बिकम इज log 5 तो 0.693 को हमें चाहिले लिखि दे परिबा 2.303 into log 2 माने 0.3010 for simplicity if you want to otherwise no issue divided by t half होची 100 is equal to 2.303 by t 80% into log a by a minus x बा log 5 आ जाइतला ऊपर log 5 ठीक अछि ताले एठे सॉल्व कले 2.303 कटि जीवो ताले t 80% multiplied by 0.3010 is equal to 100 multiplied by log 5 log 5 रो 0.699 नहीं जीवा 0.7 नेले भी हबो t 80% is equal to केते आसीबो 100 multiplied by 0.699 divided by 0.3010 तमे जदि एठे 0.693 नै थिबो ताले ऊपर 2.303 रहबो तळे 0.693 रहबो कैलकुलेशन तमे तमरो वे रे करिवो जे केमती तमे कैलकुलेशन करछो इट डिपेंड्स अपॉन यू 100 multiplied by 0.699 divided by 0.301 पिला माने ए भले तमे प्राय क्वेश्चन को ए भले ही टैकल करिवो मोर तो आसला 232 वेरी गुड सुनो 232.22
तो तुम एटा जदि 232 आसीबो 233 आसीबो ताले ठीक अछि बट 232 233 ए दिटा पई ही तुमको मार्क मिलिबो बट जदि तुम 235 बा 238 लिखुछ एग्जाम रे मार्क मिलिबो नाही कैलकुलेशन पई माने प्रॉपर कैलकुलेशन पई भी मार्क रहिछि तो सेही केस रे हमें छाड़ देले भी चलिबो 3.83 मिनिट हबो नाही 3.83 मिनिट हबनी ठीक अछि ए क्वेश्चन देखियो तो 3.83 हबनी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा भल लागुची मजा लागुची क्वेश्चन सॉल्व करिवारे क्वेश्चन रहिछि calculate the relationship between derive the relationship between t half and t 25%. t half माने t 50%. Then आउ गोटे रहिछि t half and t 75%. Then t half and t 90%, 99.9%. तो एग्जाम रे से रिलेशन गुडा को प्रूफ करिया को भी पचारि थाए अच्छा मिनिट को कन्वर्ट करिके कहिसंदी लक्ष्मीधर यस यू आर राइट तो हमें प्रथमे डेरिवेशन टा करबा t half and t 25% फर्स्ट डेरिवेशन t half and t 25% एक्चुअली एग्जाम रे कहिबो सेटा केमती कोन पचरा हम कहूची t half and t 25% सो हमें जानि छे जे k1 is equal to 2.303 by t half sorry t 25% ହେଇची ताले एटा log a by a minus x एटा a minus x केते होबो 25% of a sorry x होबो 25% of a ताले a minus x होबो 75% of a that is 3a by 4 solve कले a multiplied by 75 divided by 100 लक्ष्मीधर पूरा जबरदस्त आंसर दउछनी लक्ष्मीधर कीप इट अप लक्ष्मीधर बहुत बढ़िया आंसर दउछनी अन्य माने काहे की फीका पड़ जाउछनी आ गोटे सोनू मझिरे टिके इनिशिएट करथिले बर्तन पुणी अथर रहिले 3a by 4 so solve कले a cancel then k1 is equal to हमें already जानिछे that is 2.303 into 0.3010 by t half by 0.693 divided by t half this is equal to again 2.303 divided by t 75% multiplied by log 3 minus log 4 by log sorry log 4 by log 3 log 4 by 3 log 4 by 3 let it be log 4 by 3 2.303 2.303 cancel अच्छा 0.3010 माने हम जानते log 2 0.3010 माने log 2 multiplied by t 75% is equal to केते आसीबो t half multiplied by log 4 by 3 हला ताले एटा केते आसीबो t 75% is equal to t half multiplied by log 4 by 3 divided by log 2 हला तो log 4 by 3 log 4 by 3 माने हमको एटे सॉल्व करिया पड़ियो log 4 by 3 माने log 2 रो स्क्वायर माइनस log 3 तो हमें ए भला करिकि भी छाड़ देले भी हबो ठीक अछि रिलेशनशिप तो कहैछि बट मु एटा सॉल्व करि कहूछि log 4 by 3 by log 2 डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करू कैलकुलेटर नहीं तुमको देखियार अछि t हाफ log 4 by 3 माने हमें जानते 2 log 2 सो एटा को मु रफ रे बाहर सॉल्व करूछि log 4 by 3 होछि तुम्हारा डिवाइडेड बाय log 2
log 4 by 3 माने log 4 minus log 3 by log 2. log 4 minus log 3 माने 2 log 2 minus log 3 divided by log 2. But 2 minus log 3 by log 2. केमती है log 2 दी जारे डिवाइड कर देली बर्तन log 3 रो वैल्यू जानिछि मु केते 2 minus log 3 रो वैल्यू अछि 0.477 divided by यार वैल्यू अछि 0.301. So 0.477 divided by 0.301 solve करले जहा आसीबो ताको solve करिवा 2 minus 0.477 divided by 0.301 so आसिला हमरो 0.415 so t 75% is equal to भूल ही जाइछि कोड कोटे t 75% is equal to always twice the half life period. It is always twice the half life period. That formula रही 75% completion होबाकू twice the half life period. कोड गोटे भूल हो जाइए देखा पड़े पुणी twice the half life period हम जानी twice the half life period हम ताले सब तो ठीक ठाक अच्छी हाँ 25% सॉरी एटा 25% t 25% 75% लिख दीजिए एटा 25% रो राइट t 25%. It is nearly equal to 0.5 पाखापाखि पड़िबो but 0.4 multiplied by t half. तो एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो जे prove that the time taken for 25% completion of a fast order reaction is equal to 0.415 multiplied by the half life period of the reaction. So t 25% is equal to t half multiplied by 0.415 एभला क्वेश्चन एग्जाम रे डायरेक्ट आसे प्रूफ करिया पई ठीक अछि. नेक्स्ट हमर थिला t half and t 75%. बर्तन हम जिबा t half and t 75%. अगेन सेम फैशन रे हम सॉल्व करिबा आ मु एटा तम मान पई टास्क दोची तम माने नेक्स्ट क्लास रे करिके आथिबो t half and t 75% t half and t 99.9%. सेम फैशन रे सॉल्व करिके आथिबो जेमति एटा सॉल्व कराइछि बस केवल लॉगरिथम रो वैल्यू टिके यूज होबो सेगुडा को कैलकुलेशन करी करिवो देखिवो केते आछि आ से अनुसार मते नेक्स्ट क्लास रे सेकंड और थर्ड रो आंसर केवल कहबो आ एग्जाम रे केवल डायरेक्ट कहबो t half is equal to 2.38 into t 25%. yes you are also right 2.38 ठीक अछि लक्ष्मीधर. then t half t 75%. t 75% is equal to t half multiplied by how much? t 99.9% is equal to t half multiplied by how much? तो ये तीनटा तुमरो काम रहला डेरिवेशन बाकी दीटा नेक्स्ट क्लास रे करिके आनथिबो. आमे आउ किछि सेक्शन बर्तन एडी हाफ लाइफ पीरियड रिलेटेड सरीला बा हमरो फास्ट ऑर्डर रिलेटेड आमे जति प्रॉब्लम प्रैक्टिस करया कथा आई थिंक सरीला बर्तन आमे कोन जिबा आमे नेक्स्ट जिबा तुमरो जदि एटा प्रेशर रे थांदा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इफ इट वाज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रे थांदा जदि सो आमे एडे हेडिंग दबा जे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन बट डेरिवेशन ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ठीक अछि. तो हेडिंग रोची डेरिवेशन ऑफ फास्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट in terms of pressure कहा पाए in terms of pressure for in terms of pressure for कोथि पाए रहबो for ideal gas reaction ही हबो सब गैस नो ideal gas reaction
आइडियल गैस माने कौन ना जो गैस तुमर गैसियस लॉ को मानिबो जेमति हमें कहबा आइडियल पिला ही इज एन आइडियल स्टूडेंट माने जे सब किछि डिसिप्लिन को माने ताको हमें कहबा आइडियल स्टूडेंट सेमति जो गैस ता सब गैस लॉ को मानिबो गैस लॉ भीतर कौन अछि बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एवोगाड्रोस लॉ गे लुसेक्स लॉ ठीक अछि तापर तुमरो कंबाइंड गैस इक्वेशन बा आइडियल गैस इक्वेशन ए सब रहिछि तो एगुडाक तुमर आग सिलेबस रे थिला एबर सिलेबस रे नाही तेणु आम एते मुंड खेलबार नहीं derivation of fast order rate constant in terms of pressure for ideal gas let's consider a fast order reaction fast order ideal gas reaction fast order ideal gas reaction a plus b gives rise to c sorry a gives rise to b plus c a gives rise to b directly b plus c लिखिबा तो एटा डिपेंड करछि हमें को भलिया नउछे a gives rise to b plus c बा a plus b gives rise to c तो आमर एटा a gives rise to b plus c a भेराइटी रो क्वेश्चन एक्चुअली रहिछि तो a gives rise to b plus c गोटे नबा आ गोटे आमे रिएक्शन नै कि देखिबा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a plus b gives rise to c तो आमे दीटा भेराइटी रो कोन करबा गैस इक्वेशन को नबा a gives rise to b plus c a plus b gives rise to b c तो इनिशियली प्रेशर जदि हम देखिबा इनिशियली माने t is equal to जेतले 0 थिला सेतले कोन थिला इनिशियली लेट द प्रेशर वुड बी p1 लेट द प्रेशर वुड बी केते रहबो ना p1 इनिशियली आर प्रेशर p1 थिला आ एटा केते आसीबो कोडा याको हमें नेचे हमें यार इनिशियली किछि प्रेशर नथिबो सो इट इज 0 atm ये भी 0 atm कोडा सी रवि किस समय पर हम जो देखिबा आफ्टर टाइम t बा एट टाइम t सेकंड पर यार प्रेशर केते हिजिबो प्रेशर सपोज सेट जेंदी a minus x हेतिला एडे भी सेंदी x atm प्रेशर कम गेला सो इट विल बी p1 minus x atm p1 minus x atm हेजिबो ठीक अछि p1 minus x atm ताले एडा केते हिजिबो x atm एपटा भी x atm बुझियला जेंदी हमरो एडी कोन जेंदी हमरो कंसंट्रेशन कम थिला a minus x एटा प्रेशर ता कमी की p minus x होला ओके किछि किछि ऑथर pb pc नि थिबे जेतोले डिफरेंट डिफरेंट थिबो किछि किछि ऑथर pb pc नि थांती किंतु हमें सेम ही नबा प्रेशर सेम रहबो बोली हमें नै छै हमें दीटा वेराइटी रो क्वेश्चन करबा जे हमरो एग्जाम पर्पस देखि एटाक माने बेसिकली हमरो बोर्ड एग्जाम रे भी एते आसीबोनी बट तुम्हारो ये एग्जाम रे बहुत आसीबो नीट जेई रे ताले टोटल प्रेशर जदि हम देखिबा टोटल प्रेशर हमरो केते आसीबो टोटल प्रेशर आसीबो pt is equal to केते आफ्टर टाइम t टोटल प्रेशर एट टाइम t pt is equal to p1 minus x plus x plus x p1 minus x होची कहार a रो प्रेशर b रो होची x c रो होची x सो p टोटल होची हमर टोटल प्रेशर आफ्टर द रिएक्शन टोटल प्रेशर आफ्टर द रिएक्शन होची एतिकी ताले फर्दर हमें सॉल्व करले केते आसीबो ना pt is equal to p total is equal to p1 minus x plus x बा p1 plus x so further we can write here as p1 is equal to so
sorry, x is equal to, further we can write here, x is equal to केते आसीबो ताले pt minus p1, x is equal to pt minus p1, x is equal to आसला हमर केते pt minus p1. ताले फाइनल प्रेशर ऑफ A, इनिशियली प्रेशर थिला P1, फाइनल प्रेशर ऑफ A, तो हम लिख परिबा फाइनल प्रेशर ऑफ A, A रो फाइनल प्रेशर केते आसीबो, दैट इज इक्वल टू P1 minus x थिला, सो P1 minus x, x जगह हम कोन पुट करिबा ना pt minus P1, सो P1 minus pt minus P1, so P1 minus pt plus P1, that is 2P1 minus pt, 2P1 minus pt, P total is the total pressure. ठीक अछि, so एडा होछि हमर फाइनल प्रेशर ऑफ A, इनिशियली प्रेशर थिला केते P1, ताले applying rate expression, applying rate expression for applying rate expression apply kale kon haba na rate constant, that is k1, rate constant, that is k1, rate constant asche amara kete k1, rate constant is k1 is equal to 2.303 divided by t log concentration of A थिला, concentration of A माने initial concentration of A, तो हम एटे लिख दे परिबा initial pressure of A, so P of A initial, P of A initial, सेटा concentration of A initial थिला divided by concentration of A final थिला, so initial by final हला, ताले एटे पुट कले 2.303 by t log PA final केते, PA final होची हमर केते ना 2P1 minus PT, so एटे मु लिख दोची PA final 2P1 minus PT divided by, sorry, PA initial थिला PA on P1, PA initial केते थिला, PA initial was P1, sorry, PA initial was P1 divided by PA final is 2P1 minus PT. गेलिना प्रणाम, बहुत दिन परे गेलिना आसुनी, so it will be 2.303 by t log P1 divided by 2P1 minus PT. बुझिएला, so this is the expression for rate constant of a first order reaction of type A gives rise to B plus C. Let it be equation number 1. So हमें लिखि परिबा equation 1 represents the rate constant for a first order ideal gas equation equation of type A gives rise to B plus C. आमे A gives rise to B plus C एबे कले पुनी आमे कोन करिबा ना A plus B gives rise to C, एटा गोटे टाइप रहछि, A plus B gives rise to C, पछर देखि ना एबेटो देखिले चलियो, पछरु न देखिले मे बी प्रॉब्लम ही परिबो, माने प्रॉब्लम ही जाय पारे, पछर माने कोन तमे जदि प्रीवियस क्लास बिल्कुल करिनो ताले देखियो पड़िबो प्रीवियस क्लास, ना जदि सेटा बुझी पारलनी, अच्छा फाइनल बाय इनिशियल, सो हमरो जदि हम देखिबा रेट कांस्टेंट रो एक्सप्रेशन कोन थाउची सोनुराज, देखो रेट कांस्टेंट रो एक्सप्रेशन थाउची 2.303 by t log A by A minus x, A होची तुम्हारा कोन ना A होची इनिशियल, A minus x होची फाइनल कंसंट्रेशन टर्म रे, सिमिलरली एडे प्रेशर इनिशियल प्रेशर फाइनल, इनिशियली A रो प्रेशर केते थिला P1 atm, it was P1 atm, final pressure केते आसिला ना 2P1 minus PT, so put कर देली P1 divided by 2P1 minus PT,
पुट कर देले हमर पळे आसला बुझिला ओके तापर आमे नेक्स्ट आउ गोटे कंसीडर करबा B2 देकी लेट्स कंसीडर अनदर ideal gas equation that is कौन ना A plus B gives rise to C. Let initially at time t is equal to 0 let the initial concentration was A ठीक अछि ना एटा कले हबनी ए क्वेश्चन हमर सिलेबस रे नाही आकु एक्चुअली बुक रे भी नाही मु भाबथिले एटा करी बोली कि किंतु एटा पूरा चेंज हे जिवो ए वेराइटी रो क्वेश्चन हमें जमा करिने माने ए टाइप रो क्वेश्चन हमें बस ये देखिने तो एटा हमें करबा को जीवानी जेई एडवांस लेवल रो एटा क्वेश्चन पूरा चेंज हे जाउची फ्रैगमेंटेशन पूरा चेंज हे जिवो तो एटा ए रहइबो गुटार बी रहइबो कंसंट्रेशन एक्स सरीबो से अनुसार देखिला आडू पूरा एपट सेपट हे जिवो तेणु एटा करबानी छाड़ दबा ठीक अछि या रिलेटेड गोटे प्रॉब्लम करबा एते डिफिकल्ट को जीवानी या रिलेटेड गोटे प्रॉब्लम करबा प्रॉब्लम करिकी प्रॉब्लम क्वेश्चन दे दोची तो तमरो काम हला एटा को सॉल्व करथियो नेक्स्ट क्लास रे द फॉलोइंग डाटा वेर ऑब्टेन्ड देखो पिला माने मु जेते पारुची अधिक रो अधिक क्वेश्चन सॉल्व करोची सो दैट तुमे प्रैक्टिस पूरा फुल जोश रे करथिबो केमिकल काइनेटिक्स रु जेमदी गोटे भी क्वेश्चन मिस अप न हुए ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर thermal decomposition of N2O5 thermal decomposition of N2O5 at constant volume that is 2N2O5 gas gives rise to 2N2O4 plus O2 ठीक अछि फर्दर रहिछि जेतले टाइम प्रेशर टाइम 0 थिला प्रेशर थिला टोटल प्रेशर नॉट टोटल प्रेशर इन एटीएम थिला 0.5 आबेडा सेकेंड रे 0.5 जेतले 0 थिला सेतले टोटल प्रेशर 0.5 माने इनिशियली 0.5 प्रेशर थिला 100 एटीएम बेले एटा वैल्यू बदल जायछि 0.512 calculate the rate constant ऑलरेडी एटा फास्ट ऑर्डर बोली कुहाइछि ठीक अछि नहले हमको समस्या हबो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट तो हमें नेक्स्ट क्लास रे क्वेश्चन को सॉल्व करिवा देखिबा केमदी कोन होछि सेम वेराइटी रो क्वेश्चन किंतु एटे क्वेश्चन चेंज हेछि केमदी ना a was giving b plus c किंतु एटे कोन अछि a gives rise to 2a gives rise to 2b plus c 2a gives rise to 2b plus c सो स्टोइसियोमेट्री टिके चेंज हेछि तो हमें सेम फैशन एटा अप्लाई करिवा बट टिके चेंज होबो 2a gives rise to 2b plus c a gives rise to 2b plus c a gives rise to b plus c so it 2a gives rise to 2b plus c एटा रो फॉर्मेट चेंज हेछि सेटा आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ टाइप a gives rise to b plus c किंतु एटे 2a gives rise to 2b plus c आमे नेक्स्ट क्लास रे बा आसंदा खाली आमे क्वेश्चन को सॉल्व करिवा ए क्वेश्चन आ तमरो जो होमवर्क रहिछि ए दिटा सॉल्व करिके आस्तिबो एठी हमरो कोन फर्स्ट ऑर्डर रिलेटेड जहा भी सरि जिवो बा काइनेटिक्स जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सरि जिवो तापर आमे जिबाहरी तुमरो थ्योरी जो रहिछि कोन आरएनएस इक्वेशन आ ता रिलेटेड प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा ओके
Thank you for joining the session today. Thank you all of you. Thank you very much.